हमारी बोरोर से बात की कि वहाँ तो आप हमें ये बताइए कि और during your visit at तो उसमें मुझे जो एक्सपीरियंस है एक क्लीन पैनल देने के लिए मुझे समझ में आया वो मैंने यही दिया उन्हें कि आप अपनी रिपोर्ट में आप दोबारा से एक बार आज की जो स्थिति देखी गई तो सर हमारे कोई साउंड की दिक्कत होगी तो हमने फिर उसका ये जवाब दिया बैंक को कि क्योंकि क्या कहते हैं आपके बैंक ऑफिशियल साथ में गए and he has told us that because that property is not having any approved map उसे अपनी रिपोर्ट में incorporate करना और हम on the oral request of the bank official हमने लेकिन यहाँ जोड़ने का कुछ है सिस्टम नहीं है हमें मैं आपसे सर जुड़ पाए मैं भी बात करना चाह रहा हूँ। देखिए आपने बड़ा अच्छा किया कि इन्हीं हो रही है बचाने में देखता हूँ नहीं कर पा रहे हैं अरे जो जोड़ने वाले आदमी साहब जोड़ नहीं पा रहे ना जो इंसिडेंट है तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अनइंटेंडेड एरर नहीं है ये इंटेंशनल आपका इसको अवॉइड किया गया है when you have not wasted so should we help all the friends जो मतलब इंटेंडेड जानबूझ के ऐसे गलत काम करना चाहते हैं तो जॉइन कौन कर रहा तुम जॉइन कर रहे हो हाँ तुम जॉइन करा रहे हो आपने बोला लिंक भेज दे रहे हैं हाँ हम लिंक आपको भेज दे रहे हैं आप भेज दीजिए बट मुझे ये लगा कि अब शायद वो ये एक्सपीरियंस उनके लिए तो आवाज सही हुई थोड़ा सा अच्छी बात मैंने अपने सभी साथियों को कहना चाहिए कि अनइंटेंडेड एरर के केस में तो हमें इन्फोर्समेंट है जी जान से करना चाहिए लेकिन गलती तुम ज्वाइन करवा रहे हो क्या डॉक्टर नावल चलो ठीक है वो ये कहाँ ज्वाइन हो रहे ठीक है आर एम एडवोकेट नावल हाँ ठीक वो आर एम साहब नहीं जुड़ पा रहे बट एक्चुअली जनरली देखा गया है कि वैल्यूअर जो है वो दूसरे वैल्यूअर के साथ फैसला ये प्रैक्टिकल एक बात बताइए एक डॉक्टर जो है वो खुद ऑपरेशन सर्जन ऑपरेशन खुद नहीं करता अपना कंपाउंडर से कराता है तो दूसरा डॉक्टर को ऐसे बचाना चाहिए साथ कनेक्टेड अच्छा लेकिन आप दिखे नहीं सर नहीं सर तो फिर वही बात आपको कैसे लगानी है तो आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें ठीक सर बात ये है कि देखिए क्या कहते हैं अब लोग गलती तो थी उनकी जो कि अब उन्हें किसी तरीके से क्या कहते हैं देखिए उनके लिए भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ क्या कहते हैं मेरे सिर्फ इसे शेयर करने का सिर्फ ये मोटिव है किसी को कितना भी एक्सपीरियंस हो मेरी एक राय ये है मतलब देखिए प्रैक्टिकली तो आपको एक प्रोफेशन और मुझे पता है कि हम साइड जो है वैल्यूअर का पहुंचना तो जरूर है मैनेजमेंट करना सर वरुण जी प्रोफेशन ये हो तो फिर वो नमस्कार सर नमस्कार सर नमस्ते एक्चुअली वो नेट आज बड़ी नेट के ऊपर बड़ी दिक्कत हुई
तो मेरे ख्याल में कहाँ से शुरू करें? हाँ? तो साउंड दिखाई, एक बार साउंड दिखा। मेरे हाँ साउंड ठीक है, बोलिए। हेलो। अच्छा, ड्यू टू नेट प्रॉब्लम बड़ी हम तो 10 मिनट जुड़े थे, लेकिन बाद में फिर नेट की जगह दिक्कत जोड़ पाई, तो इसीलिए आई लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू। RM साहब भी जुड़ गया, फिर वो भी नहीं जुड़ पा रहे थे, चीफ गेस्ट साहब भी नहीं जुड़ पा रहे थे। वहां तो ले मीटिंग से निकाल दो। So I like to welcome all our participants. I like to welcome our OP Burma sir, who will introduce our speaker, and I like to welcome Mukesh Malhotra sir, who is the regional manager here in RM2 Canara Bank, who could not also join, but he had joined today. So I like to welcome all of you. Since time is short, we will not try to discuss much. So just start our work. Now I like to request OP Burma sir to introduce our chief guest. OP Burma sir, please. We would like to be given the privilege to welcome Shri Mukesh Malhotra, Economic Canada Bank Council, as our chief guest to preside over today's webinar on the subject of valuation of commercial property with case study and legal aspects. At the later part of the subject of webinar raised, that is the legal aspects, we will be pleased to know that our chief guest, Mr. Malhotra, is a legal luminary. His educational qualifications include LLM, LLB, LLM, and CAIAB. Certified Associate of Indian Institute of Bankers. So he started his career as a lawyer and appeared in high courts and we have handled arbitration matters. तुम्हें देखोगे ना? He joined bank. भी प्रोग्राम कर and have worked at various places in the state of UP, Haryana and Delhi. बाकी तुम आना करो. All kinds of matters pertaining to recovery, arbitration, commercial, litigation opinion, etc. on behalf of the bank. As chief manager of the bank, he headed the international operation, asset recovery management branch, and currently he is heading the regional office, having command over 10 divisions. Fortunate to have him today between us, and I am sure will benefit from his advice to us as to how to take care of unintended errors that may occur during valuation practice. I request Shri Malhotra ji to bestow his experience about our profession, and he will also appreciate that some sort of mistrust crops up between the valuers and bank quite often, particularly during the valuation of liquidation of NPAs. We hope to learn from our chief guest as to how we can work together in the interest of growth. I request Mr. Mukesh Malhotra ji to kindly consider us. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. तो उनकी तरफ से and other valuable members of this association. Thank you for inviting me. Truly an honor to stand before you all today as we gather to celebrate this particular occasion
a very prominent topic, commercial properties valuation, as I understand. So the value contribution of valuers is immense as far as financial sector is concerned. We deeply involve ourselves with our valuers, and valuation of properties give a very fair impetus to us to take financial decisions or decisions regarding the mortgage and the marketability of the property are fairly dependent upon the valuation or the opinions given by our esteemed panel valuers. So, having worked with our panel valuers on the sanctioning side as well as on the liquidation side also, as the two contrast aspects are there normally when we go for the valuation at the time of the sanction. Previously, there used to be a lot of differentiation when we go for the liquidation, but nowadays, valuers are also becoming more and more, we can say, prudent, and they are also involving themselves more and more into the legal aspects and dynamics of the profession to give a fair valuation of the property to the financial institution to which they are engaged. So valuation, although a very overlooked, is a very coming cornerstone of our economic landscape, to my opinion. It is very a crucial factor wherein all the financial institutions, or you can say investors, take decisions basing upon the valuations of the assets given by our panel or valuers or the panel valuers. So as we navigate through the ever-evolving market dynamics, as far as my opinion is concerned, we face a lot of challenges, and the way the markets are evolving, and today's topic, which involves commercial properties, so a lot of due diligence is required while assessing the commercial properties, because valuation of the commercial property is basically slightly different and complex as compared to the residential or other assets. So, if by simple financial assessment tool one can understand the valuation and use it to his advantage, we can understand in the market, when we see the market, the prices of the shares are basically dependent upon the valuations, or we can say based on the demand and supply. The valuation of the residential property, in my opinion, is the result of market comparison. We compare a market where the property is standing. However, commercial real estate or various micro market related parameters due to the nature of assets and the market. To me, what differentiates the commercial real estate from the other investment options? First, its identity as a regular rental asset demands as financial valuation. Second, the pricing of the commercial real estate is heavily influenced by numerous factors over which one has no control. First is like nowadays interest rates are quite fluctuating factor. Second thing is economic outlook. Third thing is the population and the demography of the place. And another thing is supply and the demand and the property market performance, which makes the pricing more complex. So, considering this situation, I think the valuers is of the view that property purely, if we assess from the income generation point of view, this is the most relied upon method, to my understanding, is capitalization rate approach. We capitalize the property depending upon the, so in this rate, I think all of you are well versed with this. As far as I understand, it depends upon the net operating income upon the capitalization rate. Now, if you see the government rate also, the capitalization rate are also evolving. Just now I was discussing with Das, so he informed me that it was 12 point some of the metrics which you used to take, now it has come to 7 and 8. So some of the properties with the same valuer as assessed in the past, given the higher valuation, now the valuation of those properties has drastically, or you can say, come down to a larger extent. So it is largely dependent upon the, again, where the net operating income may also increase or decrease depending upon the various market link factors, and capitalization rate also is changing. So which changes the valuation and which affects the valuation of the property to a larger extent. And owing to these reasons, now the unstructured borrowers, I can say,
हाँ, the तो amount देखना comes होगा। into an NPA, all these things are अच्छा, being अपन called join into करा नहीं? question in the court of law. अच्छा, पढ़े And ले? nowadays, valuation is also being challenged अच्छा, into मूड the आपका अपन various join forums करो, on account वीडियो of में one अपन reason नाम or the का other. Even the income tax authority, to my understanding, now if someone has some chartered accountant has assessed, taken the valuation from the point of view of declaring the depreciation of asset or the something. I think authorities are also going for the fresh valuation of the properties, and if the difference is high, they are also questioning the valuations. नहीं नहीं अपन रोहित adjust करो। There is no straight jacket formula, to my understanding, which gives a straightforward formula ड्राइवर ना to a larger extent, which to give the valuation of the property. All you can say, all luminaries are here, which will throw during the discussion part of this event, the light upon the factors which is affecting the valuation of these assets. But of course, to my understanding, assessing a commercial property in the real terms is really difficult and really a very challenging process. Last year also, I think, informed me that they have started an initiative, One Nation, One Format formula, to streamline the process of valuation across various financial institutions, to make it more transparent, to make it more clear, and to make it more reliable. So this is a good initiative, and I appreciate the efforts. For the past 1.5 years, I am associated with the All India Valuers Association and our Tazi and other esteemed speakers, and lot of improvements are visible. So from my side, a great event is being organized, though started with some delay or due to distortion in internet services. But yes, of course, a lot of contributions have been there from all of your side, and I congratulate the All India Valuers Association and thank you for inviting me as a chief guest to this event. Going forward, I think guest speaker is already there. So without deliberating much on the subject, I request Daji to take this event forward. And once again, thank you for inviting me as the guest speaker of this event. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable comments and recommending our association. Now, without delaying it, I would request Institution of Engineers Chairman Mr. Mukesh Kumar Singh to say a few words about this. Oh, thank you, Padyaji. On behalf of Institute of Engineers, I would like to welcome Mukesh Malhotra ji, Regional Manager, Canara Bank, Kanpur. Also, I would like to welcome today's invited speaker, Professor Mainak Ghoshal from Kolkata University. All renowned valuers who are present here in virtual mode. Institute of Engineers as well as IVA both are working together the establishment of IVA, and Das ji and your whole team organized very good seminar last year here in Kanpur. Today the program is already delayed due to the destruction in internet services. Rightly selected topic today, the commercial property valuation and legal aspects of valuation is very much required, because a lot of factors which are influencing the valuation of commercial property, which are related to finance, legal laws, societies, social factors. So I hope today's guest speaker will address all these issues. And as Malhotra sir was saying, that Das ji has initiated to make a uniform format to give the reports of valuers across the country. So I think that is a very good initiative from IVA side to harmonize the activities of valuers.
So once again, I welcome to you all. Welcome today's chief guest as well as today's invited speaker. Thanks. Thank you, Mukesh ji. Thanks a lot, sir. Mr. Sunil Kumar Patnaik has joined or not? I think his name is not वो there. एक्चुअली ज्वाइन किए थे, उनको इंट्रोडक्शन करनी थी, अभी ऑन द वे है। तो रमाकांत यादव जी हमारे पास सेक्रेटरी थे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन करिए। रमाकांत यादव। रमाकांत यादव जी ने भी शायद ज्वाइन नहीं किया है। नहीं, ज्वाइन कर चुके हैं। एक्चुअली क्या ना, उनको अभी भेजी ना, अभी पटनायक सर से फोन किया था मैंने, तो वो ऑफिस में ज्वाइन तो किए थे पटनायक ने, लेकिन वो किया था, लेकिन उनको हम एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि दोबारा जो है मैं उनसे महीना वन नेशन वन फॉर्मेट की बात हम लोगों ने कहा था, ये आईबीए में हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन हमारी बस एक रिक्वेस्ट है कि सर आईबीए हम लोगों की बात नहीं सुनती है जितने बैंकर्स की बात सुनती है। अगर ये रिप्रेजेंटेशन अगर सर बैंकर्स के थ्रू अगर चला जाए तो सर इस बात पे सर काफी ज्यादा आगे चीजें बढ़ सकती है। Definitely, sir. We have also discussed this issue in our bank. अगर आप देखिए all across what I understand from 3 to 4 banks, the format which is being used now is quite exhaustive, or it's almost similar. So I think this can be done. We will definitely take up with our higher office to take this thing forward. बिल्कुल सर, मतलब कि भाई, क्योंकि इसमें क्या है कि दो तरह की चीजें हैं कि वन नेशन की बात है, वन फॉर्मेट एंड वन फी स्ट्रक्चर भी अगर हो जाए तो सर कभी ये नहीं आएगी। अभी जो दिक्कतें आती हैं कि सर इस बैंक में ये फीस है, इस बैंक में ये फीस है, तो हम लोगों को सर जो है प्रॉब्लम सर काफी ज्यादा आती है इस तरह से। तो definitely this solution is worth considering here, and we'll take this thing forward. रमाकांत जी जुड़े नहीं हुए अभी? अब मेरा इंटर स्पीकर का इंटरेस्ट बाद में करेंगे, नहीं तो फिर स्पीकर यादव जी को, रमाकांत जी को थोड़ी सी 2 मिनट के रोक देते हैं। अभी एक्चुअली चीफ गेस्ट साहब को कहीं निकलना है, तो एक सर्टिफिकेट उनके हाथ में हम देना चाहेंगे, क्योंकि उस मैंग ने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो एक सर्टिफिकेट उनको दे देते हैं, एक से मिल लगेगी। ओके ओके, चल रहा है सर। मैं ये कहूंगा कि सर ने जो ये स्टडी प्रेजेंट करी है लीगल एस्पेक्ट, अगर आप ये हम लोगों के साथ शेयर भी कर देंगे, सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। घोषाल साहब का बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो आई टेक प्रिविलेज एंड ऑनर टू अनाउंस, बिकॉज दिस इज हैपनिंग इन द वेबिनार मोड, सो all I can do is I can announce. So this is a technical webinar organized by All India Valuation Association. I have to welcome the honorable guest speaker Shri Mainak Ghoshal ji, and this certificate of appreciation is issued by All India Valuation Association. And I take the privilege to announce this certificate. This is to certify that Shri Mainak Ghoshal has successfully and contributed through his presentation on valuation of commercial properties with case studies and legal aspects in technical webinar held on 13th of August 2024 on behalf of organizing committee council Shri Mukesh Malhotra, Chief Guest, Regional Manager, Canara Board, regional office to Kanpuri, to thankfully acknowledge the valuable support and wishes all success in future. This is signed by Shri K.K. Upadhyay, General Secretary, and Shri S.S. Daj, President ji. So, on behalf of all of you, a big round of applause for the speaker, Shri Mainak Ghoshal ji. Over to you, Das. Okay. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. बंद करो। तो रमाकांत यादव जी अपना इंट्रोडक्शन। थैंक यू उपाध्याय जी। प्रोफेसर mainak Ghoshal is a civil engineer, researcher, author, educator and consultant with over 25 years of experience in various fields.
He is an IBBI and CBGT registered valuer and structural engineering consultant who has worked on project for MES, AIL, Railway, VST, IOCL, state, municipalities and private structure with more than 60 papers and more than 10 books chapter on topics such as nanomaterial, polymer, composite, cement, concrete and heritage structure. He is chairperson of All India Valuer Association, West Bengal and an active member of several professionals, associations and institutions such as CAI, IASC, ICII and more. Professor Ghoshal has received many accolades and is the recipient of the Prominent Valuers of the Year's Award by IUVRVF. Read more and men के sorry, this is the he is the recipient of Prominent Valuers of Year Award by IUVRVF. Thank you for that. थैंक यू सर। मोबाइल में एक मोबाइल बहुत ही छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, लेकिन वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सबसे जो प्रैक्टिसिंग और जर्नल्स भी लिखने में जो है माहिर हैं, ये हमारे प्रोफेसर साहब हैं, और टीचिंग के लिए तो महारत इनकी हासिल है। तो मैं एक बार फिर से पुनः आग्रह करता हूँ भाई मोहिन घोषाल साहब से कि सर एक छोटा सा अपना सा जो है ठीक है। प्रेजेंटेशन दे दें सर। थैंक यू शेयर मेरा काम हो गया है? काम कुछ नहीं ना। विजुअल हाँ विजिबल ठीक valuation of commercial property with case study and legal aspects. Our presentation will delve into the completed process of valuating commercial property. It will cover aspects of case studies, legal consideration, and various valuation methods. I have it is very difficult to speak twice. Okay, no problem. Introduction is overview of valuation of commercial property, determining the worth based on various factors like location, size, condition, and market needs. Importance of commercial property valuation, understanding the value of property is crucial for making informed investment decisions and resolving legal disputes. Purpose of presentation is to give a detailed insight on the valuation of commercial property, offering a comprehensive understanding of the process. Now, our agenda is to cover the valuation methods for commercial properties, detailed case study involving legal aspects, definition of commercial properties. Establishment property is primarily used for business purposes, including office buildings, industrial factories, and retail spaces. Types are, retail buildings, warehouses, cinema halls, petrol pumps, apartment complexes, and hospitality establishments. May and so on and so forth. So, overview: three types of approaches: sales comparison, income capitalization, and cost approach. Sales comparison involves analyzing the recent sales of comparable properties to determine the value of the property subject property. Factors here is location, size, condition, and amenities which impact the property's value, market value. The approach is commonly used for valuing commercial properties based on recent market transactions. Income calculation, determining the property value by analyzing its income potential and the associated risks. Calculation of the net income, operating income, by subtracting the operating expenses from the property's total income, and which plays a key role. And capitalization rate, just Dr. Malhotra was speaking. Sorry to disturb you, sir, but slide is not moving, I think. No, my screen it is moving. I don't know whether your screen. Is the side moving? Yes. अभी it moved. Now it moved. Okay. Yes, moving, sir. Okay. To count the slide, the capitalization rate is very important for the income approach, because the more stable the property value,
or more stable the income generating, the more lower yield conversion rate, or the more unstable the higher yield conversion rate. Like this it goes on. And the investor expects from the property a more stable rate. The cost approach, generate property value by evaluating the cost, replacing it with a similar property adjusted with depreciation. This is called replacement cost. It involves estimating the cost of rebuilding a similar property from scratch, considering current construction rates. Depreciation considerations are both physical and functional. Mainly state land depreciation we take into account to reflect the decrease in the property's value with time. Now, our case study introduction concerns the commercial property in Kolkata. Application of not variance but only cost approach method, which I have used. Brief background, its property location, type, and all will be studied. Now, case study process, different valuation approaches, which is the cost approach, and result and completion are will be dealt with. Now, introduction. Once a swampy state of land in the eastern Calcutta, now it has turned into a dreamland due to the government policies, and it is very near to the airport. And policy to accommodate the burgeoning population of the government in the 60s and 70s started to lease its land to the private developers on a promoters on a long-term basis. Now, in accordance with the banker's instruction, it is a nationalized government bank. The above established property, which is situated in Salt Lake, Calcutta, was inspected on 23rd September 2016. The slide is again not moving, sir. Okay. Now it's moving? Yeah. Now okay? So you have to move it every time, I suppose. Yeah, I'm moving, but it's just one second. Should I maybe? Yeah. No, should I again? Yeah. No, you please continue and keep moving. Yeah. Just tabbing. Okay. Keep tabbing on the button. That was doing this, No. Yeah. It's coming? Yes. Now it is. Okay. Yeah. Somehow I don't know why it's not. It was inspected on September 21st, 2016 for the market value, fair market value, for the purpose of mortgage valuation, which is the most common type of banking lease. But the study referred to us by the Corporate Finance Division of a nationalized bank, with the owner of the property being the governor of state of West Bengal, and the original tenant being Mrs. Reproscan India Private Limited, having its office at 4 Jyotimbak Road, Guriyat, Kolkata 20. While the new tenant being Mrs. Reproscan Tech Park Limited Liability Partner, having its office at Hatchik by 1 Lava Surrounding, Elgin Road, near Dhanpur, Kolkata. Now, it's a leasehold land. Its owner is the government of West Bengal. Lease to these parties. One is the main leasing, one is the sub leasing. And the building is known as PSCM Tech Park, measuring more or less 237 to 89.62 square feet super built up area, which is occupied by the Messrs. Lessee Reproscan India Limited from the year 1986. 31 years have passed. It's a yearly premium of 388,382.42 as per a deed in 1986 for 993 years lease period. The lease period being a perpetual lease, which we treat it as a freehold land lease. Now, the commercial property or the commercial building is a RCC frame structure with a board pile chap type formation with a year of construction, 9 to 10 years. So at that time 2017 it was 8. There are several finished and unfinished commercial units on different floors. The building was completed during 2009-10 and maintenance is very good. The total outside of the building is very aesthetic with aluminum glass panels, glazing, ACP, stone ceramic metal claddings. Now, location, plot number 52, block DN, sector 5, Salt Lake, electronic complex, total 91, coming under Navodigamta Industrial Township Authority, local self-government development authority, working under West Bengal State Government. Sublease of the commercial building, the total SBA is 2378, I just told, square feet, where the sublease portion is 208. That means the total super build-up area is 237289, the sublease is 208,457.62 square feet. And the characteristics of the site, near the College Mall crossing, sector 5, nearest east-west metro station is Salt Lake sector 5 station,
7 to 10 meters walk from that. Bus stop is College Mode. Is unlike land, the plot is the natural topographical features. The see, road is more than 30 feet wide. Corporation road. The water connection is a municipal connection type. The power supply comes CSC. It is calculated as a corporation limited. The plot is within new development sector 5. And the most, populated the commercial area. The north and south type 2 road and premises of electrical regional test laboratory. South and west is, east and west is plot 51 of Merlin Infinite and land of West Bengal Development Corporation. Now the prevailing market rate 110 to 120 lakhs per quota. The guideline rate was obtained from the registration office and from the market value of the government. We assess the rate as 110.00 lakhs per quota, we consider the lower range. The basis of valuation is the land and building method. Land, 110, I just told, 64.73 quota, coming about 720 lakhs. And as it was a leasehold for 90 years, we depreciated by 10%. Minus this 712 lakhs, and we got the 6.08 lakhs. Land value. Taking into account of the portion of sublease and the vacant portion, the actual value of the land, that factor into 6.08, we multiplied that factor, that one sublease area by the leased area total. 569.39 lakhs we got. Land value. Note, the approximate value includes undervalued proportionate share of land, common areas and facilities. The lease is for 19 years, which is perpetually made is a freehold. Cost of construction of the area, that is sublease area, is 2,847 into 3,000 per square feet we took, and this comes 65.73 crores. And vacant space 28832 into 3500, this comes 109.12 crores. And total 7262.85 crores. Note, copy of sublease agreement was not available with us, with the bankers also. And it was not provided also. Cost of construction includes water arrangement, electricity, drainage system, and all common services and facilities. The fair market value ascertained as under value of land plus cost of construction of building. So 5629 lakhs for 762 lakhs is coming to 12892 lakhs. That is say 129 crores. So this the case study was published in the Indian Valuer Journal. This is a Valuer Journal published date of April 2017. And the legal aspects of this commercial property, may vary depending on the country or the state. However, the common aspects must be conducted by qualified and registered valuer, who has the necessary skills, experience, and ethical standards to provide an impartial and relevant opinion on value. The valuation must follow the accepted standards like the IVS, International Valuation. But at that time, IVS was not there, or the RICS Red Book, which provide guidance on the methods, approach, and assumptions to be used in different as a property and purposes. The valuation must be based on sufficient and relevant market data and evidence such as comparable sales, guidance values, yields, cost, income projections to support the value calculation. However, this was not in my case because we just approached to cover the cost approach as per the bankers. So we were shaped of these commercial difficulties. The valuation must be documented in a detailed report which contains the scope of work, where fees and data valuation, the complete description, the valuation method calculation, the source of information, the assumption, limitation, valuation results, there is valuer signature and credentials. The valuation must be done for a specific purpose such as sale, purchase, lease, mortgage, acquisition, accounting. Our case was mortgage and it was must disclose the intended use and use of value. Now there are various ownership structures. Here it was lease agreement. There are also other, apart from this, there are joint development agreements or real estate investment trusts or the fractional ownership of the shareholders or the pension fund, which all comes under the domain of this legal dimensions. So what is joint development agreement? That the contract between landowner and development where they agree to share the costs and benefits of developing land in the commercial property. What is real estate investment trust? Publicly traded entity that owns and manages a portfolio of income-generating commercial property. What is fractional ownership? Shared ownership structure where a group of investors pool their money to buy certain commercial property. What is shareholder? The individual who owns a commercial property and leases it to company or business. The shareholder can claim capital, allowances of the property expense and receive rental income from the property. What is pension fund? The retirement savings plan that invests in commercial property. The pension fund can enjoy tax advantages on the property and value. These are all type of own structures which are legally, approved. Now there are property rights, which are legal rights or interests. Entity has a commercial property. The type, figure
property or the freehold interest is the most complete and absolute ownership property right. While leasehold is a limited and temporary, depends upon time. The ours were 990 years lease, so we took it as a freehold. The transferability and multiple property rights, is a property that is subject to income, like a mortgage, land, easements, have a lower value than a property which is free and clear of income. The income and expense potential of property. For example, a property has a long-term lease, which is stable and predictable tenant may have a higher value than a unworthy tenant or a short-term lease. Ethical standards and valuation standards. At that time, we are not provide this. Now the 30 standards, ethical points. Valuation standards provide guidance on the concepts, principles, and methods the values should follow when conducting assignment. Valuation they help valuers to select the appropriate valuation approach technique. Ethics require values to adhere to moral and professional values of integrity, objectivity, impartiality, confidentiality, competence, and professionalism. They help valuers to avoid conflicts of interest, bias, and undue influence. To act with honesty, diligence, and responsibility. Following the valuation standards and ethics, valuer can enhance the trust and confidence of the users and the public in valuation of commercial property. Sorry. The conclusion of this case study is, as per proper document of subleased parties were not available. We could not ascertain the income generated due to subleasing. Second is, as in this case, we found the subleased area varied from the total area, and the bankers also suggested going for the proportionate valuation of the land for the impersonal and accurate estimate. There is a ratio subleased by the total 200 area. The value of property should be worked on the visibility. Total equal utilized 100%. So, thank you. Any questions you can ask. I would like to discuss something, Professor Mainak. Actually, we are talking about commercial property and legal property. Now, as we know, valuation of property, we classify the property in three types. That is residential, located in residential area, but is being used for commercial purpose. Legally, it is not approved. That means it's in developed authority have not approved because the layout have been approved for residential purposes, but the use is for running commercial use. So legally that cannot be termed as the commercial property. Then how to value that, and how treatment will call it with residential, commercial use there. No, because if documents are not available for commercial property, we have to value as residential. Because mutation, what does mutation say, and what does the land records of municipality say? If there is sufficient evidence to show that commercial, it is used as a commercial, or if cat is commercial, then we will value it as a commercial property. No, actually we have to consider some other aspect. Whether this property in residential area and approved for residential purpose is being used for commercial use, therefore running hotel, can be suitable for mortgaging it in the bank. Because in case of surface complaints, I think this will not be surface complaints. Whether such property should be mortgaged, or how the value will work on that. Why should we value as a commercial? Because there is no evidence to say it is a commercial property. Just by using it as a commercial, we cannot value it for residential also, no? Because this is hotel. We cannot say it is to be a residential. Why? It is in residential area, but it is being. It is built up for the residential purpose, no? So we can value it as a residential purpose. Why not? No, in case of NPA, I think bank cannot. Also, what does the building sanction plan says? Proposed residential. That's I'm telling. If it is in residential area, the sanction plan is only for residential purpose only. Exactly. Then since sanction is residential and the location is residential area, but is being used for hotel purpose, then how can the bank mortgage the same property? That's I'm to question that. I'm saying this is a group discussion, so I like to request some other fellow members to come forward and discuss this matter. Because today with the commercial property, so we should also consider all the parameters of the commercial property. So I will not pressurize my Professor Mainak, but I will request all to come forward to discuss about it. My question is, the location is residential,
the building approval is residential, but it is being used for commercial. Whether the valuer can as a valuation part, the valuer can write it is residential property and it being used for commercial property. This has to do that has to be done. But thing is that whether this property can be mortgaged or not, and in case of NPA, if suppose approval is for residential and commercial property, if the different authority seal it, then from where the bank will get back his money. So I request all the participants to discuss on this issue. This is some top issue, warning issue matter. This is, please. Now, bankers have very little idea, of what to do. I mean, they have how they sanction the loan got sanctioned. That is also a mystery because there is no evidence to suffice that the property is a commercial one, but it has been used as a commercial property. So there is also the legal search report. What is it is saying? This all should be taken into account. Please, some other comment on this. सर एक होटल को यूज करने के लिए जैसे कि उसको फायर सेफ्टी लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसको यदि रेस्टोरेंट रन करना तो फसाई का लाइसेंस चाहिए उसको रेस्टोरेंट यूज करने के लिए, देन फायर सेफ्टी अप्रूवल लेना पड़ता है यदि वो होटल चलाना चाहता है तो। और यदि वो सब चीज अवॉइड करी गई है, पैसे देके होटल चल रहा है, तो फिर वो तो उसका बैंक ने मॉडगेज किया तो उस केस में कुछ भी नहीं हो सकता। उस केस में सिर्फ जो बैंकर कर गया या जो मतलब जैसे मॉडगेज कर दिया उसको उस इंटेंशन में, वो फिर कुछ नहीं हो सकता उस प्रॉपर्टी का, वो रेजिडेंशियली सेल होगी। बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू तो सर डिफरेंट इशू है सर, भाई प्रॉपर्टी मॉडगेज करना ना करना। मॉडगेज अगर लाइसेंस की बात हो रही है, जब आप होटल वैल्यूएशन करोगे उसका, तो उसमें जो है मैंने सर्टेन 2-3 चीजें बताई है, वो उसको करना ही होनी चाहिए, तभी वो होटल कहलाएगा। नहीं अभी तो सर वही तो बताया इन्होंने, इसमें जो नक्शा ही पास हुआ है मैप का, मैंने नक्शे का वर्ड ही यूज किया, मैंने कहा कि अदर कंप्लायंस होते हैं होटल यूज करने के लिए। एक होटल के लिए आपको फायर सेफ्टी चाहिए, आपको उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिपार्टमेंट होता है उससे एनओसी चाहिए, आपको एमसीडी से मतलब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल कॉर्पोरेशन होती है उससे एनओसी चाहिए, कई सारी एनओसी जो रिक्वायर होती है होटल चलाने के लिए। प्रॉपर्टी है एनओसी की बात हो रही है सर, एनओसी तो सब बाद में आएंगे, पहले तो सर नहीं है उनका, तो एनओसी कोई मिलेगी नहीं उन्हें। नहीं सर, मनमानी कुछ प्रकार डालेंगे कि जितनी 5 लाख और करोड़ लाख की प्रॉपर्टियां दिल्ली में सब रेजिडेंशियल एरिया से करना होटल रन कर रहे हैं, और उसमें ये सब करना जरूरी होते हैं। फायर सेफ्टी का लाइसेंस हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, टाइम से टाइम सारे लाइसेंस रिन्यू होते हैं। सर मैं सर जो है मतलब कि मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ रेजिडेंशियल एरिया की, मैं तो बोल रहा हूँ कि सर जब अगर रेजिडेंशियल अगर मैप अप्रूवल है, रेजिडेंशियल मैप अप्रूवल में सर होटल का लाइसेंस मिल ही नहीं सकता है, तो आगे रूल। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वैल्यूअर्स को लैंडिंग के अकॉर्डिंग ही वैल्यू करनी चाहिए। बैंकर्स वो कुछ भी रन करे, डजंट मैटर टू अस, लेकिन अगर बिल्डिंग का लैंडिंग रेजिडेंशियल है, वी शुड बी वैल्यूएट फॉर द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, whether it is occupied by some hospital, dispensary, guest house, whatever it may be, it's the concern of banker वो क्यों मार्केट कर रहा है, but the valuer should be have a right to just give what the value is। मेरा ऐसा कोई होना चाहिए। नहीं वही है सर कि मतलब इनकम अप्रोच का मेथड जो है इस प्रॉपर्टी पे लागू नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो है सिर्फ लैंड बिल्डिंग मेथड ही जो है, जो भी आपका जो लग रहा है वो आप उसी से बिकेगी। लेकिन जहां तक जो है जो दास साहब का सवाल था कि बैंक को मॉर्गेज करने की बात है, तो मॉर्गेज तो बैंक कर ही सकती है। यस, बैंक आगे चलेगा और रेजिडेंशियल के लिए चलेगी। सर बैंक जस्ट having only a just portion, they have concern of that कि वो क्या है क्या नहीं है, they have to do withdraw from it, but for the certificate of the valuer it will be done valuation as per the value only। भीम सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? वही ये बातें जो सही कही जा रही है वो सब सही है, ऐसा नहीं है। रेजिडेंशियल ही यूज के लिए है, यदि लैंड यूज रेजिडेंशियल है तो हमें रेजिडेंशियल में जाना चाहिए।
में हमारा कहना है वैल्यूर को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या वैल्यूर को क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए ना कि रेसिडेंशियल यूज है लेकिन प्रैक्टिकली कमर्शियल यूज हो रही है। मतलब कम से कम कल को बैंक ये न कहे कि आपने वैल्यूएशन तो कर दी, ये चीज मेंशन नहीं करी, अगर किया होता तो आपको लोन न करते। बात ये, तो इसलिए वैल्यूर्स को हम क्योंकि डिस्कशन कर रहे हैं, अब वैल्यूर पार्ट में क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए उस पर हमें ज्यादा मतलब अमल करना चाहिए। तो वैल्यूर्स को क्लियरली लिख देना। उसमें जो मैंने लाइसेंसों का भी जिक्र करना चाहिए। अगर होटल यूज हो रहा है बट इसमें कोई लाइसेंस नहीं है इस तरह का, तो लाइसेंस जब लिखेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली वैल्यू चेक हो जाता है, कवर हो जाता है। सर मेंशन तो करना चाहिए कि वहाँ की एक्टिविटी क्या चल रही है। 100% मेंशन रिपोर्ट उनको रेजिडेंशियल के अकॉर्डिंग देना चाहिए। अब वो उनका आउटलुक है बैंकर्स का, जो क्या करे नहीं करे, एडवांसेस करे ना करे या ना उनका चाहिए, उसको बोल्डली लिखना चाहिए ताकि उसको नजर आए। वो ये नहीं कहते आपने ऐसा बीच में लिख दिया मुझे पता नहीं चला। बिल्कुल सर, बैंक में सर जो है फॉर्मेट में जो है आप देखेंगे रेस्ट्रिक्टिव यूज लिखा होता है, तो इसका यूज सर वो रेजिडेंशियल है। बाकी आज के डेट पे मौके पे जो है वो कमर्शियल यूज कर रहा है। नाउ इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द बैंकर, भाई वो क्या विदाउट हैविंग एनी लाइसेंस और वो क्लियर डिटेल में लिखना चाहिए। जो गवर्न कर रहा है बिना किसी लाइसेंस वगैरह के रन कर रहा है, तो उसमें से बैंक का परिवार जाता है वो क्या डिसीजन लेते हैं। मैं अभी रिसेंटली टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी हम सोनीपत में एक छोटी सी वैल्यूएशन कर रहे हैं जिसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो लैंड किसी पार्टी ने 25 एकड़ लैंड एग्रीकल्चर परचेज करी और उन्होंने उसको कहीं से पटवारी से रिपोर्ट लगा के दिखा दिया कि ये बड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और सोनीपत के अंदर आ गई है। और हमारे दो साथी वैल्यू है उसकी ऐसे एग्रीकल्चर लैंड लिखे, कमर्शियल लिखे और लिख के वैल्यूएशन कर दी। अकाउंट बड़ा है, 1800 करोड़ का एनपीए हुआ अभी कुछ टाइम पहले, जिसमें वो एक प्रॉपर्टी है। अब वो दो वैल्यूअर भाई जो है, एक तो कोविड वगैरह एक्सपायर हो गए और दूसरे जो डिपेंड हो गए। अब जो वैल्यूएशन कर रहे हैं वहां दिक्कत ये आ रही है, रजिस्ट्री एग्रीकल्चर लैंड की है और मौके पर भी कोई एक्टिविटी नहीं है, एग्रीकल्चर खाली पड़ी हुई है और वो बैंक में इतनी हाई वैल्यू हो रखी है कि अब वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई वैल्यू कम कैसे हो गई। बिल्कुल पूछी जाती है। 5 टाइम्स वैल्यूएशन ज्यादा करी है उन्होंने मार्केट रेट से, 5 टाइम्स, जबकि आज के कम कैसे हो गई। आज ये लॉन्ग टर्म पूअर पहले डिसाइडेड लॉन्ग टर्म पूअर इंडियन गवर्नमेंट के साथ सोचना है प्री डिसाइडेड हो गया है। क्लियर दिया जा रहा है बैंक की तरफ से, हम तो टेक्निकली एडवोकेट ने लिख के दिया है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी है। सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, कोई भी एडवांसेस विदाउट कंसेंट ऑफ बैंकर नहीं होता। हम चीज को कंसिडर नहीं करके बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर जस्ट गिविंग ओपिनियन, नथिंग मोर देन दैट। और हम लोग हमेशा चर्चा नहीं करते बैंकर की लायबिलिटी हमारे बच्चे नहीं सर, प्रॉब्लम हो रही है। हरिओम गिरी जी का जो क्वेश्चन है सर, अगर मान लीजिए एडवोकेट ने लिख करके दिया है कि सर वो लैंड यूज कन्वर्ट हो गई है या बोल दिया कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, कमर्शियल एरिया में है, लेकिन जो है हमारा जो प्रेरोगेटिव है एज अ वैल्यूअर, जब हम कह रहे हैं मार्केट वैल्यू लेने के लिए, तो मार्केट की तो सर जो रेट होगी वहां पर वही आएगी। आप जो है एक के कोई डेवलपमेंट नहीं है, मार्केट वैल्यू से तब बढ़ेगी तो वहां पर डेवलपमेंट हो जाएंगे। लेकिन जब वहां पर कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो सर जो रेट तो सर वही रहेंगे मार्केट के, भले आप उसका कन्वर्जन करा ले लीगली या ना कराए लीगली। तो वो तो सर प्रॉब्लम जो बैंक की नहीं, वैल्यूअर की वो थी अगर किसी के कन्वर्जन होने से प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ती है। इट इज जमीन से अंदर आती है 2002 से फॉर मॉर्गेज होता है, उसके वैल्यू से कोई मतलब नहीं एज इट इज रहता है। ऐसा नहीं है और नहीं, मैं इस बात डिसएग्री करता हूँ आपकी से, जो आप कह वैल्यू नहीं बढ़ती है। सर हरियाणा के अंदर लाइसेंस लेने के लिए आदमी को
एनालिसिस में एक बात में सर 20 सेकंड इस केस में क्या हुआ है कि पार्टी ने 23 एकड़ का सीएलयू लेकर के उसका लेआउट करा दिया है और ये पीछे 35 एकड़ में बाद में परचेज करी गई और उसका सीएलयू नहीं लिया गया। पटवारी की रिपोर्ट लिख गई कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आती है, उसे कन्वर्ट लेंगे क्या टाइटल है, क्या किसके को जिक्र ही किया है और उसी के बेसिस में बेच रहे एडवोकेट ने रिपोर्ट किया, उसमें मॉड्यूलेशन है वो और 5 टाइम्स वैल्यूएशन है आज की रेट बढ़ी हुई होने के बाद भी। सर मैं 1800 करोड़ का एनपीए है, बैंक का कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कंसोर्टियम अकाउंट में 10 बैंक इन्वॉल्व है सर। एग्री सर, मैं यहाँ इसलिए कहना चाहूंगा कोई भी कन्वर्जन पर्पज के लिए किया जाता है, न कि वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए। अगर किसी ने अगर सीएलयू करा था तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू पर्पज के लिए सीएलयू करती है। नाउ इट इज कहते हैं कि हमारे विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको क्या रेट दे रहे हैं, क्या अडॉप्ट कर रहे हैं। इन टोटली परव्यू ऑफ वैल्यूएबल हाउ इज द प्रॉपर्टी वैल्यूएशन डजंट मैटर। सर मैं डिसाइड करता हूँ आपकी इस बात से सर, यदि किसी को देखिए मैं आपको जो आदमी को सीएलयू मिलता है पर्टिकुलर पर्पज के लिए मिलता है, इसलिए एक आदमी को वेयर हाउस कराने के लिए मिला और एक को कमर्शियल एक्टिविटी के लिए मिला, दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, आपकी बातें एग्री कर रहा हूँ। जब कोई एक्टिविटी वहां पे नहीं और उससे प्रीवियस हमको तो जज करना होगा ना सर। अच्छे डेवलप के वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेदर इज इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, एनी पर्पज। अब जब तक वो बैरन लैंड है, नाउ यू हैव टू जज दैट थिंग, हम उसको क्या वैल्यू देना है। मेरी समस्या का समाधान बताइए, वो हम डिस्कशन उस चीज पर कर रहे हैं कि जो 5 टाइम्स वैल्यू से ज्यादा हुई है, आज मैं कम कर रहा हूँ उसको, मार्केट रेट दे रहा हूँ, मार्केट से और 20% ज्यादा दे रहा हूँ, तो अब मैं क्या एक्सक्यूज लूँ उनको। सर हमारा कहना है कि हमारी रिपोर्ट वाली चाहिए, हमारे पास भी एक केस ऐसा ही हमारे पास है। 132 एकड़ लैंड की वैल्यू की गई है 400 करोड़ रुपए, और मैं बताता हूँ उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 150 करोड़ से ज्यादा की केस नहीं है। शुगर प्रॉपर्टी, इट्स शुगर मिल इंडस्ट्री। सर अंतिम जब तक वो इंडस्ट्री वहां पर है तब तक उसकी वैल्यू है। कल के दिन वो वाइप अप हो जाती है, एलपीए सब हो जाता है, नो वन इज विलिंग टू ओन दैट टाइम। हाँ मैं यही कह रहा हूँ सर, आपकी केस में है जो आपके पास आ रहा है वही पुटअप करिए। बैंक इज नॉट एग्री विद दैट, लेट्स गिव इट टू देम, दे हैव टू जज व्हाट दे वांट टू डू। दे वांट टू सर बैंक नहीं कर रहा, मेमो क्यों कर रहा है सर। हमारे हिसाब से आपको जो अपना ड्यूटी होती है ना वही दीजिए, शिक्षित रहिए। ये हमारी सर सर उनके एक्सप्लेनेशन के बाद नॉट डन जस्ट मैटर ऑफ हैविंग द फिल्म ऑफ प्रॉपर्टी फॉर मॉर्गेजिंग पर्पस ओनली। इन माय ओपिनियन this is the value at the present time, but that's enough for them. Now what they want to do, leave it to them. They are just about suffer करेंगे, but what is yeah everything is bad, it's a long term cruel decision with them. वो जानते हैं and they have to suffer from them. Why we should have suffer with that thing? हमको नहीं सफर कर, हमको मिलता 20-25-50 हज़ार रुपए मैक्सिमम, हम उस टेक जो लेंगे। Any other expert comment? सर मेरे हिसाब से आपको सराउंडिंग में जो लेटेस्ट मार्केट रेट में रजिस्ट्री हुई है उनकी कॉपी दीजिए और उसको रेफरेंस में दे सकते हैं, आपके साथ ये रेट चल रहा है। सर वहां तो आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे, क्योंकि सर रजिस्ट्री जो भी कराता है सर्कल रेट पर कराता है और लैंड का स्टेटस एग्रीकल्चर है, सर्कल रेट 30 है और मार्केट रेट 5 करोड़ रुपए का है और उसकी वैल्यू 25 करोड़ रुपए का हो रखी है। नहीं हम तो आज की रेट कह रहे हैं ना, आज की रेट में जो हो रही है वही तो मान के चलेंगे। मान लिया आपने कहा कि कन्वर्जन के बाद 2 टाइम्स हो जाता है रेट, तो चलिए उसको 2 टाइम्स आप कर लीजिए।
हरियाणा में our headache, दिस इज नॉट आवर हेडेक। यदि किसी ने किया है तो उसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते। आज की रेट में जो मार्केट रेट है वो हमको जस्टिफाई करना है और उसके लिए मुझे एविडेंस चाहिए। लेकिन भीम सिंह, एक प्रॉब्लम ये भी आती है, अगर कोई ज्यादा किया, अगर कोई कम कर देगा तो बैंक भी तो कोई प्लस मांगेगा ना, हम क्यों करेंगे? जस्टिफिकेशन को देना पड़ेगा ना सर। कहाँ चलाएंगे यदि बैंक जस्टिफिकेशन मांग रहा है? हो सकता है कि काम से है दो आपका पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। एक है प्लानिंग, तो दोनों ये है अपने देखो से भी करते हैं डायवर्स भी इसमें बात ये है आपने हवाला का लैंग्वेज मेरे को अपने माइक बंद कर दे जिनका आवाज आ रहा है, अपने माइक बंद कर दे। ये कहाँ कम हो गया? वर्मा जी आप भी म्यूट हो गया, वर्मा जी म्यूट हो गया। आपने कर दिया होगा। चलिए देखिए, वैल्यू इज लैंग्वेज जो वैल्यू रिकॉर्ड में है प्राइम तो वो भी है, उसके बाद में लैंग्वेज चेंज करने की प्रोसेसिंग है। जैसे यूपी में आपका एसडीएम करता है, हरियाणा में एग्रीकल्चर लैंड में डायरेक्टर डीपीसीपी करता है, डायरेक्टर टाउन में कंट्री प्लानिंग करता है, आपके हिमाचल में भी वही करता है, आपका एसडीएम करता है, एमपी में स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है, जिसको डाइवर्जन बोलते हैं। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट है, ऐसे ही आपके क्या बोलते हैं राजस्थान में भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज आता है। हम आपको दो एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक जैसे कोई खेत है, मान लो नाम चुनाव उनको मिला है ना, पेपर में मिला है, उनको लाते हुए तो बागपत जगह है, वहां पे मान लो खेत का जगह है, तो अब बैंक को लोन दे रहा है, तेरे को सिक्योरिटी चाहिए, तो उसने कहा भाई ये खेत तो तुम्हारा कई लॉबिंग करेंगे, तो जब इसको नॉन एग्रीकल्चर रखा है, ठीक है, तो इनके लिए तो मुश्किल नहीं है, जहाँ पे वो एसडीएम की एप्लीकेशन देंगे, प्रोसेस आएंगे, 176 नोटिफिकेशन जाएंगे, उसका 143 में उसका चेंज हो जाएगा। लेकिन उससे वैल्यू नहीं बढ़ी, क्योंकि ना तो कोई फीस मिला नहीं, ना उसका कोई चेंज, उसका मार्केट में परसेप्शन चेंज हुआ। तो अब जैसे अब दूसरा बिजली में गुड़गांव इतना बड़ा शहर है, फरीदाबाद इतना बड़े शहर है, वहाँ शहरों में भी आज भी शहरों में मतलब जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर सिटी के अंदर म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर भी लैंड रिकॉर्ड लैंड उसका एग्रीकल्चर है, उसको भी चेंज करने के लिए सिटी को एप्लीकेशन देनी पड़ती है, बकायदा सब फीस है, रेजिडेंशियल की कुछ फीस है, कमर्शियल की कुछ है, इंडस्ट्रियल कुछ है। तो अब उसके बाद में लैंग्वेज चेंज होता है। अब बात आती है वैल्यू की। वैल्यू को हम डिटरमिन नहीं करते, वैल्यू कोई वैल्यू नहीं बनाता है, उसकी वैल्यू बनाती है मार्केट। मार्केट का क्या परसेप्शन है, मार्केट में उसकी लोग मतलब जो है लेने देने वाले क्या इसका परसेप्शन कर रहे हैं। क्या एग्रीकल्चर लैंड थी तो कहने शहर के अंदर मैं 8-9 करोड़ रुपया कर ले लूंगा, जैसे उसका लैंड चेंज करा लिया तो कह रहे मेरे भाई मैं तो 25 करोड़ रुपया कर बेचूंगा, ठीक है ना। ऐसे मार्केट का परसेप्शन है, 22 से 25 करोड़ रेजिडेंशियल चेंज है, नहीं भाई मैं तो 18 करोड़ में मेरे ऊपर भी होगी, 12 करोड़ की ऊपर भी होगी, डिपेंडिंग क्या लोकेशन है। तो जो वैल्यू है हम डिटरमाइन नहीं करते, वो मार्केट का परसेप्शन है। हम तो ये बात कहता है कि मैं उसका वैल्यू कम किया ज्यादा बोले, मेरे मार्केट का परसेप्शन है, हम आपको इसके थ्रू खाली सपोर्ट दे सकते हैं, ये गुलामा है, ये फलानी सेल है, ये तुम्हारा मैजिक बुक्स पे है, ये तुम्हारा नाइडोराना करते हो, यही तो हो सकता है मेरे पास। हम खाली इतनी बातें करते हैं, ये वैल्यू जो है दैट इज मार्केट परसेप्शन। तो अगर उसका वैल्यू चेंज हुआ तो मार्केट में ये हो गया तो भाई इसका बैटरी यूज होता है, इसका हाईएस्ट अच्छी जाती है ना, हाईएस्ट बेस्ट जो उसका है इंप्रूव हो गया,
और उनको छोटे बच्चों को आज यहाँ रिजर्वेशन को कुछ बन गए। तो इन बातों को ये हमारे हमारे रीजनिंग होते हैं तो हमसे पूछता है तो हम ये बात कहनी चाहिए। मेरा ये विचार है, बाकी तो भाई आप ज्यादा मेरा मैं तो बहुत कम एक्सपीरियंस में सर आपके सर। और दूसरी चीज एक और भी चीज है कि जो अपने सर वैल्यूअर्स हैं, हम लोग क्या करते हैं सर, दूसरी जगहों में दूसरे स्टेट्स मतलब कि जाकर के हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। हम लोगों को सर वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं होती है। जैसे अभी जो है आशुतोष जी ने बताया, तो आशुतोष जी ने कि भाई यूपी में जो है ये है, लेकिन अभी जो हरदोम गिरी मुझे नहीं मालूम, मैं वहाँ पर नहीं हूँ, हरियाणा में जो है मतलब लाइसेंस मिलता है। इन्होंने बताया कि लाइसेंस मिल जाने से तो आप ज्यादा कि भाई लाइसेंस मिलते हैं, जनरल लाइसेंस मिलते हैं, वहाँ पे क्या प्रोसीजर है एप्लीकेशन। लेकिन जो जनरल परसेप्शन जो आपको ये यही है कि सर जैसे ही मार्केट ड्रिवन रेट बढ़ती है, मैंने जनरल परसेप्शन क्या बात बोली, मैंने कहा मार्केट का परसेप्शन होता है। मार्केट जनरल परसेप्शन इज अ डिफरेंट इशू। मैं मार्केट इसको क्या देखते, मार्केट में कौन डील कराता है आप जानते हैं ना, हमारा आप जानते हैं मार्केट में कौन डील कराता है, हमारे पेपर बेस कराते हैं तो जानते हैं कि क्या डील है इसका। सबसे पहले रूल पूछेगा इसका कन्वर्जन हो गया, तो हाँ जी हो गया, तो मैंने कुछ पर्पज के लिए इंडस्ट्री भी हुआ है, मैंने इंडस्ट्री में भी थोड़ा सा भर गया, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में हरियाणा में 350 स्क्वायर मीटर है। ऐसे डिपेंड करता है कि अब आप बात करिए आपने दूसरी स्टेट की, दूसरी स्टेट का वैल्यूएशन करने के लिए आपको वैल्यूएशन करने से पहले वहां उस शहर के उस स्टेट के आपको बाइलॉज की स्टडी नहीं करेंगे तो बाकी खतरा उठा रहे हैं आप, ठीक है ना। तो खतरा उठा रहे तो फिर झेलना तो पड़ेगा। इन केस ऑफ एनी खराबी कोई हमको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो झेलना पड़ेगा। अगर लगती है अच्छी तो वर्मा जी इस केस में वो खतरा उठाकर चले गए, कितने बात में आपसे मदद करेगा, खतरा हमें दे गए। आप अपनी बात में जस्टिफाई कीजिए। वी आर नॉट सपोज्ड टू एक्सप्लेन द अदर सेक्शंस, उनके एक्शंस को आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। आप बैंक वाला आपको कहता है उनकी ज्यादा फीस दे, हाई ऑन कंसर्न विद दैट। अब बात यही बात अपने को जस्टिफाई कर देता हूँ, ठीक है। वी आर नॉट कंसर्न दूसरे में क्या चाहिए यार, फर्म के प्लांट में चीजें जो जैसे ऑटो रिक्शा होता है, ऑटो रिक्शा का जो है लाइसेंस जो है नॉर्मली यहाँ पे सैचुरेशन हो गई है तो ऑटो रिक्शा का सर्विस नहीं दिया जाता है। वैल्यूएशन जैसे आती है तो सर ऑटो रिक्शा अगर लाइसेंस के साथ में जुड़ रही है देयर इज अ वैल्यू कि भाई लाइसेंस है और बिना लाइसेंस के दैट इज अ स्क्रैप वैल्यू। अच्छा एक बात बताइए, आपसे प्रश्न पूछते हैं, ऑटो रिक्शा का पूछ लेते हैं। चलिए आपकी बात सुनिए, एक कानपुर में ऑटो रिक्शा का लाइसेंस मिला है एक बंदे को, और दूसरा कानपुर सिटी से 50 किलोमीटर दूर जहाँ पे गांव है उस दो गांव का लाइसेंस मिला है, जहाँ पे दोनों गांव की पॉपुलेशन मिला के 20,000 है, ठीक है। उसको दाम नहीं जाता, बताओ तो दोनों की वैल्यू बराबर नहीं किया, दोनों ऑटो रिक्शा की वैल्यू बराबर नहीं हुआ। मैंने आपसे दो एग्जाम्पल दिए, आप बताइए बराबर रहेगी क्या, हाँ ना नहीं देखता लाइसेंस की महत्व की बात कर रहा हूँ। हरियाणा जी यही बात कही है आपसे। एक्चुअल में उन्होंने उस शहर की बात की है, सोनीपत हरियाणा का सिटी है ना। सिटी में अगर लैंग्वेज चेंज होता है तो मार्केट इसलिए चेंज होता है कि वहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है, रेजिडेंशियल कमर्शियल जिसके भी लाइसेंस मिला है सरकार उसके लिए पैसा लेती है। कभी रेजिडेंस पे तो हो सकता है 50 लाख रुपए फीस, ऊपर से 2 करोड़ ले गए, ठीक है। ऐसे ही कमर्शियल के लिए मान लीजिए 2.5 करोड़ रुपए फीस है तो ऊपर से 5 करोड़ ले गए, तो अब वैल्यू उसमें 5 करोड़ रुपए 7.5 करोड़ रुपए एड अप हो गई। ये मार्केट उसको जानती है कि पैसा इतना खर्च होता है, लेकिन यही आप लाइसेंस यही आप कैथल के जिले के अंदर किसी गांव में जाकर ले गया, छोटे से कस्बे में ले गए, इतनी वैल्यू नहीं ऐड होगी बस। तो दिस इज द परसेप्शन ऑफ द लोकल मार्केट जहाँ पे आप डील कर रहे हैं, जहाँ की वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है बस।
तो हम जो एक्सपेंसिव है एक्सपेंसिव ऐड कर लें, तो आज के डेट में ऐड कर लें, बहुत ज्यादा वैल्यू होगी मैक्सिमम। एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। देखिए जो एफर्ट होता है, एफर्ट कौन करते हैं? आप मुझे बताइए, आप चार पन्ने की रिपोर्ट बनाते हैं, 8 पन्ने की 10 पन्ने की बनाते हैं, आपका टाइम तो कितना देर हो जाता है? ये आप जाकर साइड में जाते हैं, तो आप जब साइड में जाते हैं तो आधे घंटे के अंदर लौट आते हैं, अपने उसमें लौट आते हैं ना, आपके आधे घंटे की और वो 8 पन्ने टाइप 5,000 फीस होता है। मैं बताऊं, आपने जो लाइसेंस लिया हुआ है उसकी फीस है, वो जो आपका वक्त जो है वो तो 500 का है, 4,500 तो आपकी वक्त इसलिए है कि आपने लाइसेंस उसी वक्त बन गई आपकी, ठीक है ना। हमें एक वैल्यूएशन 50,000 को ले लेते हैं ना, ज्यादा है क्या है, जो घर देखने गए तो उससे 3 गुना टाइम लग जाएगा, 5,000 के लिए 15 महीने चाहिए, 50 मांग रहे हैं, क्योंकि ये हमारा वर्क है, हमारा लाइसेंस जो हमको वर्क है, ठीक है ना। तो ये मतलब लाइसेंस जो है वो ऐसे नहीं है कि वो एट पार फॉर ऑल नहीं है, ना तो एट पार फॉर ऑल टाइप से, ना एट पार फॉर ऑल, ठीक है। ये ऐसा है कि अब आपको ग्रांट मिल जाता है तो आपको आप एक इंडस्ट्री का एक वैल्यूएशन की फीस 1.5 लाख चार्ज कर लेते हैं। सेम टाइप की इंडस्ट्री, सेम कैपेसिटी की इंडस्ट्री दूसरा बैंक से करते हैं, उसको आप 25,000 में करके देते हैं। वाई दोनों में डिफरेंस है ना। तो आप इन सब चीजों को देखना पड़ता है। मार्केट क्या है, अब आप देख रहे हैं मार्केट, आप देख रहे हैं ना कि बैंक वाला तो इससे देगा नहीं, चलो यार काम तो मिल रहा है, गॉट इट, इधर हम 1.5 लाख अपनी वर्थ मांग रहे हैं, हियर कंप्रोमाइजिंग, ठीक है। तो आप मार्केट देख रहे हो ना, तो आप डिटर्मिन करो। ऐसे ही प्रोपर्टी डीलर जो है मार्केट का देखता है कि मार्केट में मैं कितने बेच लूंगा और कितना मैं सेल करूंगा। मेरा कहना ये है जी हम आपके एक्सपीरियंस को चैलेंज नहीं कर रहे थे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं सोचिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई कन्वर्जन परपस नहीं होता है, जैसे सभी को नोट करिए, सभी को म्यूट करिए। सर मैं गुरु सर के कहना चाहता हूँ, कन्वर्जन बनाना जो होता है पर्पस उसमें रिलेटेड होता है, उसके अकॉर्डिंगली ड्यूटी होते हैं सीएमयू के। यहाँ फॉर्म हुआ तो हम वैल्यू कैसे कर जाएंगे, हमारे पास अच्छी तरह से आपने बना रहे घटा रहे, मार्केट घटा बना रहे हो, समझे ना। आपको उनको पूछना कितना बढ़ गया है, आपको हम और आप तय नहीं कर रहे हैं कि इतने बढ़ गए हो, ये इतने % बढ़ गए हो, ठीक है ना। स्टेट में रिव्यू होता है, अलग अलग पर्पस के लिए तीन चार्जेस होते हैं, एक एबीसी होता है, आईडीसी होता है, लाइसेंस फीस होती है, कन्वर्जन चार्ज होता है, तीन तरह के चार्जेस। सर यहाँ पे मैं यहाँ पे कन्वर्जन हुआ ही नहीं, आपको डिफेंड कर रहे हो आप इसमें नहीं कर रहे, आप अपने देखिए वही है स्टे वगैरह दिया को नहीं करा यार, छोड़े ना अगर तुम्हारे पड़ोस में डॉक्टर ने कंपाउंडर से ऑपरेशन करा दिया, लोग किडनी में दिलवा दी, तो हम आप आज में चेक करा देते हैं आपको, हम उसको 5 टाइम्स के हमारे में देखिए मैंने नहीं कहता, हम मेरे अबाउट 5 टाइम्स हम कह रहे हैं, हम करेक्ट करा देते पुराने नाम में क्या देखते सुनिए खुद में जब पूछते हैं इससे क्या तुम अदर से बताइए। ऐसा है ये बात जो आप जानना चाह रहे हो ना,
ये बात मेरे से आप बैंक ऑफ इंडिया काम करते हैं, मेरे से बैंक ऑफ इंडिया वाले पूछे थे, 8-15 तो मैंने भेज दिया था, उसका जवाब नहीं आया, उसने दोबारा प्रश्न नहीं पूछा मुझसे। देना 8-15 पहले ये बात होती है, अगर मैं अपने बात कर सकता हूँ तो दूसरे की बात कर, उसने क्या बेसिस लिया था, वाई आई शुड बी आंसरेबल फॉर दैट। मामला रिकवरी का है 1800 करोड़ का, बॉन्ड है 10 बैंकों का कंसोर्टियम है। आप अगर आप मेरे इसका मतलब उनके पैसे की तरफ से हम अधिक चिंतित हुए। अरे हम तो आज के जानते हैं, आज बन गया इतने तो बेचने हम रहने सब करने चलने ये करने गारंटी सजेशन दिया है बाटा था ने जब ब्रीफिंग में बाटा था में अप्लाई करना जो है। मैंने जवाब दिया था, अगर चाहोगे तो मैं आपको मेल उसको भेज दूँ, आपको बैंक को जवाब दिया था। अब ये मत कहो वैसे, तो मैं हम जो बात कह रहे हैं वो लिखते भी हैं, तो ये लिखना भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे फिर जैसे क्या हमने कई दिए हैं, कई हमने जो है डिफेंड अपनी रिपोर्ट किया है, बैंक आरएम में चुकी किया जवाब दे दिया, वो इसके बाद में फिर पूछता है हम क्यों कहीं 5 गुना अभी से 5 अगर को गर्मी 5 गुना तो रखना चाहिए। अब हम धन्यवाद आप अपनी बात कहिए कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ बस। आपका बैंक ऑफ इंडिया नहीं क्या मतलब जाएगा उसके बाद एक ऐसा बैंक ऑफ इंडिया में सोनीपत की बात कर रहे हैं ना, ये कौन था उसने बंदर में सऊदी अरब के शेख को इन्वेस्टर बना दिया अपनी लाइफ में। वो भाई साहब बेलना करनी होती है जो ग्राम में थी, वो शेख के हाथ लगाए थे उसको सबने दाव दाइफ कर रहे हैं भाई साहब, वो 45 करोड़ रुपए का हमने स्टॉक पेड़ कर 600 करोड़ रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट करा 300 करोड़ रुपए, तो उसके बाद में डिफॉल्टर हो गया, उसके बाद में शेख जी ने 600 करोड़ भरने पड़ गया अलग से। तो वो ऐसा है कि लोग बड़ा दीवानी करते हैं, लेकिन हमें तो अपने से मतलब है, हमसे क्या लेना देना है, जो कर रहा है करने दो। एक्शन के प्रति आंसरेबल नहीं हो जाएंगे। फोटो मेल कर दो, ये फोटो मेल कर दो। हम अपना संतुष्ट हों जो काम से क्योंकि जो आशा करते हैं कि हम लोग सर आगे आने वाले सेमिनार में उनका बहुत बड़ा कंटेंशियस इशू है, बहुत कंटेंशियस इशू। आप जब बताइए, अब आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, अगले वेबिनार में आप इसका जवाब ले भी आइएगा, ठीक है। तो अगर आपको इनकम अप्रोच से वैल्यू करनी है, मेरे तो साथी आज तक थे नहीं, उनका भी मेरे पास आज तक फोन आता, तो मैंने कहा यार होटल है जो पिछले 5 साल से लॉस में चल रहा है, 5 स्टार होटल है, ठीक है, उसके पर में उसकी ऑक्यूपेंसी जो है आज की डेट में वो 5% है, तो 5 साल से लगातार लॉस में चल रहा है, 5 साल से भी 80-85 कभी 90 भी हो जाती है, तब भी लॉस में है, ठीक है। तो और बताओ उसको इनकम अप्रोच से उसकी वैल्यू कितनी निकालोगे? इनकम अप्रोच इनकम अप्रोच का 2 तरीके होते हैं, ठीक है। नंबर 1 तो होता है कि जो सिंपल की बात होती है, कितना रैंक आ रहा है उसको कैपिटलाइज कर दो, ठीक है ना, 65। और दूसरा होता है जो बड़े प्रोजेक्ट जैसे होटल्स होते हैं,
इनमें हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को हम सेग्रीगेट करते हैं और हम इनको प्रोजेक्ट करते हैं कि आने वाले सालों में ये कितने कितने बढ़ जाएंगे, कितने कितने घट जाएंगे। तो हम देखते हैं कि हमको प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा। मान लो एक होटल की लाइफ अभी 50 साल उसका रह सकता है, तो हम उसको कम से कम 7-8 साल का निकाल कर देख लेते हैं और फिर उसके बाद टर्नओवर वैल्यू निकाल देते हैं। तो अगर उसमें प्रॉफिट आता है तो उसी पे तो आप कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। अगर वो 8वें साल में लॉस आ रहा है आपका, तो क्या कैपिटलाइज करोगे भाई? मैंने बताइए, खुद सोच के बताइए। अगर 8वें साल का आपका लॉस आ रहा है, अभी हमारे दिल्ली में कई 5 स्टार होटल्स थे, मेरे भी पिछले 1-2 साल पहले बात हुई थी, अब तो करीब पूरे हो गए। मैंने कहा रजिस्टर देगा, मुझे तुम्हारे कंसिस्टेंसी कर देंगे 100%। तो मैंने कहा फिर भी मैं बल्कि प्यार भी नहीं कर रहा। अब मैंने बताया उस पीरियड में क्या हम अपने मन से ला सकते थे कि टाइम बढ़ने में आ गया अचानक से? उसकी क्लैरिटी भी देखो तो इसलिए बताया ऐसा कौन सा वो चीज आने वाली है जिससे बढ़ जाए, जाने पड़ेगा ना उनको। तो ये चीजें बहुत कंटेंशियस होती हैं, ये सब एस्टिमेशन होते हैं कि भाई 5 ग्राम बढ़ जाएंगे, कदा 25 दिन बढ़ जाएंगे। आज हाल ये है कि आज से 2 साल पहले 3700 रुपीज में 5 स्टार होटल में रूम मिल रहा था, आज वो 6000 मिल रहा है। क्या मैं 2 साल पहले ऐसे एजेंसी ला सकता था 6000 रुपए में? तो सोच के बताइए, कोई ऐसा पॉसिबल था नहीं, क्योंकि मुझे कैलकुलेट पे निकल के छोड़ा था। मैं क्या कहता 25 दिन लगता है, ये तो बात है 2 दिन में। अब ये वर्ग में 80 दिन ऐसे कौन सा मेरे को कमाना पड़ा था? कल तो बैंक दूसरा क्या उपाय कैसे लगा लिया हमने 80 दिन? तो हमें तो मैं दिया नहीं है। तो ये बड़े कंटेंशियस इश्यू होते हैं, तो इनकम बजट इसमें बड़ी खतरनाक होती है। और दूसरी बात कॉस्ट अप्रोच है, कॉस्ट अप्रोच की भी सबसे बड़ी बात है, सारे काम कॉस्ट अप्रोच से करता हूँ। लेकिन कॉस्ट अप्रोच में प्रोजेक्ट्स में हमें सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए कि उसका भी मेन जो है कॉस्ट अप्रोच तब लगते हैं जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो इंडस्ट्री होते हैं, उसमें बात होता है सब्जेक्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी, सब्जेक्ट टू पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी। अब एक प्रोजेक्ट लगा लिया है आपके राइस मिल, आपने 1 टन धान आप 1 घंटे में निकालती है, ठीक है जी। 1 टन धान प्रोसेस करती है, बहुत अच्छी लगी हुई है, सुंदर बनी हुई बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है ना, लेकिन वो आज के डेट में क्योंकि कम से कम 6 टन पर आवर की लागत नहीं होगी, तो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो जिसका मतलब जो आपका हमेशा लॉस रहेगा। तो उस लॉस का कैसे इंटरप्रेट करेंगे इनकम में? कर सकते हैं क्या, है ना? और फिर कॉस्ट में करेंगे तो क्योंकि जो लगेगा वो मशीन पर, जबकि कॉस्ट में हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे? ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं कि हमें सोचने चाहिए। बेस्ट मार्केट कितने में मार्केट को हमें मार्केट कौन नहीं करता। इनकम अप्रोच जब भी बात होगी सर, तो वो पूरे एसेट्स की बात होगी, बड़ा ये तो है बड़ा बैंक काम करते हैं, वो हम जो है मॉर्गेज करती है सर, वो लैंड बिल्डिंग करती है, वो जनरली जो जनरल ट्रस्ट आती है और वो एज एसेट्स इसमें थंबनेल भी नहीं है, उसमें सब मंथन होता है, बेसिकली हर केस के केस डिफरेंट होता है, कोई थंबनेल नहीं होता। हमको खाली होता है, घरों में होता है, जो आपके बात कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं दासू के, एनसीएसटी में भी देखेंगे सर, तो लेकिन एनसीएसटी में कितने तो आप देखेंगे लास्ट में जो अल्टीमेट डिसीजन होते हैं वो तो सर एसेट्स वैल्यू पे डिसीजन पंडित जी को देख वो असाइड की वैल्यू पे होता है। आप ऐसा समझ के रह गए असाइड की वैल्यू करते हैं, दैट वेरी डिफरेंट इशू है। उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती है, मतलब कितना कितना किसको हिस्सा आएगा वो देखा जाता है। आप बताइए आप लोग उसको अगला वेबिनार बजाज जी उपाध्याय जी के जिम्मे है, वो प्रेजेंट करेंगे।
तो इसकी जो है मतलब कि भाई हमारे यहाँ से जो है लिखने पढ़ने वाले आदमी बहुत कम है। आप जो बोल रहे हैं ना अच्छी आपको हम पता अच्छा लगेगा। आप चलिए अगली बार किसी शुगर मिल का या किसी पेपर मिल का लेके आइए। ठीक है, अब अगला रविवार उनके दिन में है डॉक्टर साहब जी सर, उपाध्याय जी के दिन में है, ये बिल्कुल बैकआउट कर पाएंगे। काइंडली लेकिन सर हम लोग कोल्ड स्टोरेज के ऊपर सेमिनार करने जा रहे हैं। एक आगे खिसका दो उसको, नहीं हम मार्च अप्रैल में करेंगे। उससे पहले आगे खिसका दो। तो देखो ऐसा है, जो तजुर्बेकार लोग हैं इनके पास पता है क्या, जिनके साथी हैं जिन्होंने 25-30 साल शुगर मिल में काम किया, इंजीनियर है, अब बताओ इनसे अच्छे कौन हमें राय दे सकते हैं? बताओ। हाँ सही है। अभी मैं एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से वैल्यूएशन करने गया, उसका मालिक ना ढूंढ रहा है, तो फिर करके आंकड़ा आ गए। मैंने अगले दिन प्रेजेंटेशन कहा था, अगले दिन फोन किया, मैंने कहा लाला जी जिंदल जी बताओ कि कितना पैसा खर्च हो रहा है इस पे पूरा और कितना और लग रहा है। बोले आप कर लो, मैं कर देने हम क्या कर दो। सच बात तो ये है, तुम्हारी जेब से पैसा निकला है, हमने माना बन गया तुमने कितना पैसा खर्च करा है, कितना पैसा और लगाओ पूरा करने को। तो वहां से हमें आइडिया लगता है कि हम पर कितने पर स्केल में क्या खर्च कर रहे हैं और क्या हम एस्टिमेट करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता लगभग 600 स्क्वायर फीट और 1500 स्क्वायर फीट। ये है कि भी एक लिटिल बिट मतलब मार्केट और की बात तो उसकी बात में थोड़ा सा कट कर लो, थोड़ा सा जो कानों को ठंडा काम भूल बोल रहा हो और क्या रूपन भूल बोल रहा है वो काफी अच्छे हो गए। थैंक यू, धन्यवाद आपका। और उन्होंने कुछ गाइडलाइंस की हमारे प्रेसिडेंट साहब और जी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Father. Thank you, Dasha. Thank you all. Thank you. Thank you.